Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Live Experience Classes. So everyone, in the last video I have given you the format of the GWAIT exam. Okay, and in this video today we are covering the whole lesson tie lines, tie spy and tie thread. So आज की वीडियो में हम लेज एंड टाई की प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस हिसाब से GWAIT में पैटर्न जो है वो सेट होके आता है एग्जाम में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. So now let's start with the lace and tie lines. How the lace and tie lines seems. Okay everyone, let's start it with the lace and tie lines. So as you can see, this is your lace and tie lines, and there are two questions regarding the lace and tie lines. Okay, regarding the lace and tie lines, there are two questions. So tie lines. So here it's mentioned lace and ZD bind in text. You need to read the two text. In lace and tie lines, you will get two text. You need to read both the text. Okay, आपको दोनों text पढ़ने हैं and दोनों text में total 5 questions होंगे. In total 5 questions होंगे आपके lace and tie lines में. So अभी हम begin कर रहे हैं lace and tie lines के साथ. So lace and tie lines में ये कहा गया है, the question is there, lace and ZD bind in text, you need to read both the text, only outcome and the statements are in this form from first to fifth. You can see 1 and 2 statement are there and next statement in the next question. Okay, and then you have to cross it out. Kreuzen Sie an. What you need to cross? Richtig oder falsch. Richtig means true, falsch means false. Is it true or false? So let's read the first text. So the first text is about Yasmin. Here it's mentioned. हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसा टेक्स्ट दिया जाए, पहले टेक्स्ट पे जाने की जगह ऑलवेज रीड द क्वेश्चन. आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, एंड क्वेश्चन में जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस दिख रही हैं, बुलेटिन पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप उसको अलग से हाईलाइट कीजिए. राइट, Roberto will Yasmin knock unroofing. So unroofing, this is the main point. Will call to the Yasmin. Okay. Next is Roberto kommt am Abend nach Berlin. So am Abend, so on evening, and where the person is coming to the Berlin, it's coming. Now let's see this. So here, hello Yasmin, hello Yasmin. Ich habe morgen frei. I have tomorrow free. Ich kann schon am Mittag nach Berlin kommen. I can come in the after your lunch timing to the Berlin und nicht erst abends spät. Until late evening, not until till late evening. Kannst du mich abholen? Can you pick up me? Abholen means to pick up. Mein Zug kommt halb eins. My train will arrive at 1 o'clock. Ankommen means 12. Am besten treffen wir uns vor dem Bahnhof. The best thing is that we can meet in front of the railway station. Vor means in front of the railway station. Dann warte ich auf dich. Then I'm waiting for you. Is this okay for dich? Is it okay for you? Schreib mir bitte schnell. Please write me fast. Oder ruf mich an. Or call me. Bis morgen, that means see you tomorrow. Ich freue mich. I'm looking forward to you in that way. Roberto is saying. So let's see. First one. Roberto will Yasmin knock unroofing. Still call to the Yasmin. So where is it mentioned? That is not mentioned here, right? That the person will call to the Yasmin. ये कहाँ पर mention है? नहीं है, I think so. So you will write it here falsch. ये आंसर आपका wrong है. Next one, Roberto kommt am Abend nach Berlin. Come evening till to the Berlin. So the person is saying nach Berlin he will come, but not in the evening. Na Mittag he will come, not late evening. So that is also falsch. Both the options are wrong here. Now let's see next question. Okay, so this is your now second question. Lieber Claudia, lieber Holger. This is the text about lieber Claudia and lieber Holger, and who is writing? Karin plus Tom. This both the persons are writing. Okay, so before going to the test again, आपको टेक्स्ट पढ़ने से नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या फॉलो करना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है. ओके, सो यहाँ थर्ड क्वेश्चन बोला है कारीन एंड टॉम. Karin und Tom wohnen jetzt in Sandvik. Jetzt means now. Now live in the Sandvik, the name of the place.
Sie kennen die Nachbarn noch nicht. They don't know the neighbor. Still, they don't know the neighbor. Die Gäste sollen Musik mitbringen. The guests should bring along with them what music. So now let's see the text. अब text में क्या बोला है? Wir haben seit 2 Wochen endlich eine neue Wohnung. Since 2 weeks, finally we have an apartment. Sehr hell, very bright, und groß and big. 85 Quadratmeter or 85 Meter square. This is 85 Meter square. Und sie hat einen schönen Balkon and it has beautiful balcony, Südside, that is south facing. Am nächsten Samstag wollen wir eine kleine Party machen and on next Saturday we will do a small party so ab 18 Uhr, so beginning of the 6 o'clock. And the person is saying, viele Leute kommen, auch Leute aus dem Haus, die Nachbarn hier sind sehr nett. Many people are coming from the house and the Nachbarn, that's called the neighbors, hier sind sehr nett, are very nice. Habt ihr auch Zeit und Lust? You all have time and desire. Lust is called desire. Dann könnt ihr euch die Wohnung ansehen. Then you all can see the apartment. Wir machen auch ein kleines Essen. And we are doing the small food or you preparing the food. Ihr könnt gern noch etwas zu trinken mitbringen. You can also bring something for to drink. Und vielleicht auch Musik and perhaps also music. Unsere CDs sind nämlich noch in der alten Wohnung. Nämlich is called mainly. So the person is saying here, unsere CDs sind, our CDs are majorly or mainly still in the old apartment. And then, könnt ihr kommen? You all are coming. Schreibt uns doch eine kurze Mail. Write in a short a mail. Ach ja, die Adresse ist Sandweg, 12 dritten Stock. Well, the address is Sandweg 12 and third floor. Stock is called floor. Dann hoffentlich bis Samstag. Then hopefully see you on Saturday. Okay. Viele Grüße, many greetings from Karin and Tom Soy. So the first question is saying, Karin und Tom wohnen jetzt in Sandvik. That Karin and Tom जो है वो दोनों Sandvik में रह रहे हैं. Is it true? So yeah, das ist richtig. Next one, sie kennen die Nachbarn noch nicht. They still don't know the neighbor. So das ist falsch because they know. They mentioned already the neighbors are very nice. Die Gäste sollen Musik mitbringen. The guest should bring the music. Yeah, that is also richtig. It's mentioned here. Musik, unsere CDs. Vielleicht you need to bring it, right? So this is the correct answer. So ये याद रखना प्लेजेंटाइल लाइंस में आपको 2 टेक्स्ट दिए जाएंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपके पास इन टोटल होंगे एंड उसमें आपको रिश्टिश और फाल्स मार्क आउट करना. सो ये हमने देख लिया लेजेंटाइल लाइंस का फॉर्मेट. नाउ लेट्स सी लेजेंटाइल स्वाई फॉर्मेट. सो दिस इज योर लेजेंटाइल स्वाई फॉर्मेट एवरीवन. तो यहाँ पर आपके पास 2 साइट्स होंगी लाइक एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी एडवर्टीजमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट? सो लेट्स सी दिस पार्ट नाउ. लेजेंटाइल स्वाई एवरीवन. So let's see the Leysen why. So first question, यहाँ पर क्या बोला गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज लेसन सी दी टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट रीड करना है एंड aufgaben the statement also where you are finding the information you need to cross it out a oder b. Sixth one, it's saying that Sie suchen ein billiges Fahrrad, that you are looking for a cheap bicycle. अब आपको cheap bicycle की information कहाँ मिल रही है? Let's see. इसमें बोला है Fahrrad है, Rot red color, Zweierrad, drei Ginge für nur 60 Euro, 60 Euro zur Verkaufung to sold. And here it's saying that billigen Motorroller 200 Euro, außerdem Fahrradtaschen and 30 Euro, das ist Stück. So overall, nothing is mentioned about here. This is not a cheap because you can say 200 euro Motorola and Fahrradtaschen. This is only about the bicycle bags, which is only the part you are getting for the 30 euro. That piece, particular one, 30 euro. So this is not cheap, right? So आपको cheap bicycle चाहिए. So that you will get it there, 2 years old. Okay.
and Reiginger with the 3-1, and then gears, the tires nur für 60 Euro for 60 Euro and for to sold. So here I is the right answer. Now next one is Sie wollen in Deutschland Urlaub machen. That you want to do in Germany vacation. Okay. Und auch weitere, and then it's mentioned here, und auch weitere Deutsch lernen and want to learn further German. So here it's saying that Sie wollen in Deutschland Urlaub machen, that you want to do in the Germany, what Urlaub vacation and want to learn German further. Wo finden Sie Informationen? Where you can find the information. So Option 7, I'd sing Urlaub in Deutschland, that is vacation in Germany, attractive Angebote. You will get the offer für die ganze Familie, for the whole family, fire. Ferien, that is the holiday, auf dem Bauernhof, that is called farmyard or a courtyard. Lernen Sie die Natur kennen, and you can learn the nature. And in the next one is saying Ferien-Sprachkurs, holiday language course in the Deutschen Hauptstadt, in the German main city or in the German capital, im Sommer und im Herbst, in the month of summer or in the month of Herbst. The information here, all the levels, Stufen is called levels. So all levels, if you want to learn your German, then you can go with this level. Na? Here it's mentioned you want to learn German. आपको जर्मन पढ़ना है आगे या जर्मन लर्न करना है तो यहाँ मेंशन है स्प्राक कोर्स लैंग्वेज कोर्स सो दैट्स व्हाई बे इज द राइट आंसर नाउ लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला गया Sie möchten in Deutschland auf dem Rhein eine Schiffreise machen. So that's the name of the place where you need to do the Schiffreise. Ship traveling or the trip. Auch die Stadt Riudesheim besuchen. And also you want to visit to this city. Wo finden Sie information? Where you are finding the information? Let's see. So यहाँ पर bulletin point क्या आपका Schiffreise mit dem Zug. That is called the day trip with the train. Besuchen Sie Rudesheim pro 49 Euro pro person, 49 Euro per person. Wanderung durch die Weinberge, that is called hiking through the Weinberge mountains and another activities. But nothing is mentioned about the ship trip. यहाँ पर कहीं पर भी आपको ship trip के बारे में कोई information नहीं है. But यहाँ अगर हम बे ऑप्शन देखते हैं यहाँ लिखा है ना Reichen Party auf dem Wasser in the water and आप ये सारी चीजें सर्व कर सकते हैं ब्रंच ब्रॉट बेजुक देयर स्टार्ट र्यूडेसहाइम एंड आवन में प्रोग्राम होगा सो द बे इज द राइट आंसर सो यू कैन विजिट टू द सिटी एंड वाटर स्पोर्ट्स लाइक यू कैन टू द शिप ट्रिप आल्सो देयर सो आपका बे राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 इट्स सेइंग Sie suchen für Ihren Freund eine Arbeit. You are searching for your friend a work. Ihr Freund kann nur am Wochenende arbeiten. Your friend can only work on the weekend. Hat keinen Führerschein. He has no driving license. Führerschein is referring to the driving license. So आप देखिए फर्स्ट वन में बोला है Fahrer in gesucht, in searched, Samstag und Sonntag, Saturday and on Sunday. Gute Bezahlung, good payment and einfache Arbeit, simple work will be there. And per Stunde you will get pro Stunde payment which is 6 euro 6 euro and यहाँ पर अगर हम इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करें जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सर्च कर रहे हैं ड्राइवर को राइट फारर को on Samstag and Sonntag so you will just go with this but this is wrong why ये यहाँ पर क्यों false है because यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि had keinen Führerschein he don't have the driving license अगर driving license नहीं है then how he can run the vehicle ना तो वो कैसे गाड़ी चला सकता है अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा द राइट आंसर विल बी बी ओके सो एम्प्लॉयर सर्च कर रहा है दे आर सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयर इन द बिग किचन लाइक इन द रेस्टोरेंट and they will give you the payment for the hour like which is 6 euro 6 euro they will get
रिवर। सो बे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर with the last question, question number 10. Now this is the last question of the exercise. So it's easy, logical, informing, unsolved, lunchtime. For what? For the Chinese food you want to go. Then wohin gehensi, where you will go for that. Okay, for that food, where you will go. First one is saying here, Asienland. Asialand. Chinesisches und Indonesisches Spezialitäten. Here you will get the Chinese and Indonesia's specialties. Bonta is the Ruha town. Monday is the peace day or the quiet day. Maybe they have in the Yoknum site. Opening time, that is halv Seoul bis 22 sure. That means 12 o'clock, 11:30 to till 10 o'clock. Okay. So here you are getting Chinese and Indonesia's specialty. But here it's mentioned Sheena restaurant, only the Chinese restaurant. So Lotus Garden, to the Lotus Garden, only they are talking about the China restaurant. Okay, Sheena restaurant, but nothing is mentioned about what you will get there. Okay, and you want to go with your friend on क्लॉक है तो इवनिंग टाइमिंग हो गई तो इवनिंग में तो आपने जाना ही नहीं है राइट सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी हो सो ये है हमारे लेजेंटाइल्स वाई वी हैव डन विद द लेजेंटाइल्स वाई नाउ एंड आइट्स आल्सो नाउ लेट्स सी द लास्ट टाइल जो है हमारी लेजेंटाइल वाई वहां पर किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है लेजन जीरी टेक्स्ट आपको यहाँ पर टेक्स्ट को रीड करना है एंड दी आउटकम एंड देन स्टेटमेंट्स में एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट सो फर्स्ट वन बोला इन द क्वेश्चन नंबर 11 in the Restaurant am Mittwochabend können Sie bis 23 Uhr im Garten sitzen. That you can sit on the Wednesday evening till 11 o'clock in the garden. So क्या ये mention है? Let's see this option here. So यहाँ पर बोला गया है कि आप वहां पर बैठ सकते हैं राइट सो अब हम लेट्स सी ये आंसर यहाँ पर मेंशन है या नहीं मेंशन अब हम इसको देखते हैं जस्ट अ मोमेंट एवरीवन यस सो हम देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है एसनून trinken im garden okay that's fine you can do the food and drinks in the garden walking tag that is called weekdays 22 till 22 o'clock तक it's open and on Friday and Saturday 23 that means 11 o'clock the timing is mentioned to you बट यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट में बोला है वो बोला है वेडनेसडे इवनिंग में क्योनन जी बिस टिल 11 ओ क्लॉक तक आप गार्डन में बैठ सकते हैं बट कहाँ पर है मेंशन कि आप 11 ओ क्लॉक तक वो भी वेडनेसडे इवनिंग में बैठ सकते हैं दैट इज नॉट मेंशन ओके बिकॉज 23 दैट इज 11 ओ क्लॉक की टाइमिंग में तो फ्राइडे एंड सैटरडे की बात होती है वेडनेसडे इवनिंग की हो ही नहीं रही है सो दैट इज रॉन्ग सो फर्स्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन It's saying out there Straße on the street. Sie dürfen nicht parken. You are not allowed to park here. क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? Yes, यहाँ पर बोला भी गया है park and verboten. That means parking is prohibited or forbidden. So yes, this information is correct here. Sie dürfen nicht parken. नेक्स्ट वन बोला गया है आपसे that is an einer Haltestelle on the stop. Heute fahren die Straßenbahn und Busse nur bis zum Hauptbahnhof. Today, driving the Straßenbahn, that is called tram, and buses only on the Hauptbahnhof, only on the main railway station. Is that information true or false? Let's see.
सो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट में बोला गया है पेयर Fahrt zum Hauptbahnhof. So it's saying die Straßenbahn fahren heute nur zur Kaiserstraße. अब देखो यहाँ पर एड्रेस आपको दिए, जो ट्राम है वो ओनली काइजरस्ट्रासा में ड्राइव कर रही है. Zur Weiterfahrt for the further trip or a journey. Zum Hauptbahnhof nehmen Sie. रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन से आपको लेना पड़ेगा Buslinie, बस लाइन, that is 103. This bus so this information is again wrong. So ये लेजन टाइल के यहाँ पर 3 questions हमने देखे, and now let's move. Last 2 questions we have, that is 14 and 15. Let's see this 2 question. So यहाँ पर बोला गया है आपका im Fenster eines Kaufhauses. So im Fenster einen Kaufhauses. That means in the window. Kaufhauses, that's called department store one. So here it's saying that Zonden Aktion 50%. That is called here. That means there is the offer which is 50%. When you अब Morgan können Sie billiger einkaufen. Ab Morgan means onwards tomorrow you can buy everything in the cheap rate. Einkaufen, or you can shop everything in the cheap rate. So yes, that is true because it's already mentioned you will get tomorrow everything in the half price. Hälfte. Okay. Now last one, question number 50. It's saying eine Bäckerei, a bakery. An der Bäckerei. That's called on the bakery. So wir ziehen we are reallocating. Umziehen means to reallocate. So it's saying die Bäckerei Kohlhammer finden Sie ab nächster Woche. Yes. So die Bäckerei Kohlhammer finden Sie ab nächster Woche. Next week you can find it in their Tunnenstraße Süd. That is the name of the street where you can find this bakery. So let's see. The bread roll in the Tunnenstraße. That is wrong because they are mentioning in the text next week you will find this, and here in the text is mentioned already today only. So this option is wrong, falsch. So with this logic we have done Lesenteil 1, 2 and 3. हमने Lesenteil 1, 2 और 3 कवर कर लिए हैं everyone. So total 15 questions आपके पास रहेंगे Lesenteil में. So आप ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट आप 10 से अबव इसमें मार्क्स फेच कर पा रहे हैं. 10 से अबव ट्राई कीजिएगा कि आप 10 से अबव ले पा रहे हैं इसमें मार्क्स ओवरऑल. ओके, तो ये आपका ओवरऑल गोइथे का पैटर्न था लेजेंटाइल के साथ. इन द नेक्स्ट वीडियो हम हॉरेंटाइल का पैटर्न देखेंगे एंड देन श्राइबन इंस्पिरेशन आल्सो. फॉर अस, फॉर विद अस, stay more updated everyone, and please don't forget to like, share and subscribe to our channel. If you like this video, please like, subscribe and share the channel and press the bye bye. Cheers.